everything. At the same time, you have the freedom to do nothing. All right, both ways you are free. But how did you use that freedom as an independent contractor or IBO, independent business owner? How did you do that? How did you work on your freedom? Did you allow that to build good habits, or just allowed that to build lethargic habits of life? Okay, that is something to be noted here. Now, that's why sometimes media might have a bias about a network marketing industry. Okay, just like salesmen, salesmen have a bad taboo, or they try to sell. Same way, network marketing industries, which we belong to, can also have that experience. But I was just talking to somebody in the morning that over a period of time, things have drastically changed, because the world was very large 15, 20 years back. And in network marketing, there are a lot of blue collar. A lot of people join the business just to make $500, $600 a month, and you could do that by just retailing products. You really didn't have to build massive networks, because you're talking about $500. And for that matter, even network marketing company CEOs, like founders and all, may not have really thought that there will be a Bill Britt who will have a global business. There will be a Dexter Yeager. There will be a Kanti Gala. There will be a Raj and Sangeeta. There will be a Brad and Julie Duncan. There will be a Rashmi and Smita who will build a big business. There will be a Ravi and Aarti who will build a big business. Never thought about those things. Okay, especially when the Amway business was born. If you really go to Ada, Michigan, you can see that graph, how the first year Amway volume was so small, okay, probably $2-3 million the first year. And the first Diamond Club, they did it in, I think, the backyard of Rich DeVos's home or something like that. So funny, right? That first Diamond Club. Right now we talk about diamond clubs in Hawaii and whatnot. First Diamond Club, there are only 4 people. Can you believe that? 4 people in Diamond Club. And today, in our own team, we have more than that, right? Okay, look at that, how it has evolved. So before you close the doors on this business, in your darkest moments of life, just keep in mind, okay, so that when you are tested or challenged, these faint, even though this might be faint whispers, the positive voice in your mind is always going to be faint and soft. The negative voices coming into your mind are always going to be loud and echoing. Negative are always going to be much stronger. Positive is always going to be very faint. So make sure that you always have the courage and the maturity and the understanding to listen to that faint positive of the business, okay, about the business, about yourself for that matter, because you're fully capable of doing it, okay? Now, that's why sometimes in the media or on the internet or something like that, there can be toxic words, toxic stories being told, all right? But you have to be very smart whom to listen to, because on the internet, anybody is an author. Have you realized that? Or if you work for a publisher, okay, or a newspaper company or a television company, they ask for an experience. So when you go and work there, there is a credible person who has some experience holding the mic. But on the internet, you don't know who has written that comment, whether he has done something or not. Because people, when they quit or they fade away from anything for that matter, they'll always try to put the negative on that particular entity. And they will try to portray that they have done the best for that endeavor. But still that endeavor did not work. Okay? Nobody will have that guts to say that Amway was a good company, but I failed to be consistent and develop it. Nobody will say that way.
always somebody will try to portray Amway is bad. I did my best to make it work. All right. So that is how on the internet you're going to see that. So you want to be very careful. First of all, I would never go there. Why? Because why? Every company which has thrived has negative. Okay. Some of you live in North America. All right. And there's a lot of negative about the weather, about political environment and stuff like that. But you know, if you live here, that it's a great place to live. Same thing, if some of you are locked on from another country, some of you locked on from United Kingdom, people will say, oh man, that's a bad country. But you know, living there, what good it has done for you and what good it is. So you should be grounded. Nobody can wipe that off. Same way about your last name. Nobody should question you where you are born is bad, or your last name, or who you are. Nobody can do that for you, because you will defend that. If somebody says, man, I don't like your last name, you will defend that. Okay. Why? Because you should be proud of your last name, because that is unique to you. Okay. There is a lot of history to that last name of yours. Okay. Somebody else may not know that history. Doesn't make you stupid. That makes him stupid. So same way, when somebody doesn't know about Amway and talks from the perimeter, okay, or loose words which are immature, that should make you feel sorry for that guy. You may not want to try to convince to get him and stuff like that. That is, you should not be doing that, but you should feel sorry for that person. If a blind man steps on your toes, will you scold him or will you overlook and you will help him? You will help him. So same reaction to somebody who's negative. So you are going to face that criticism. And let me tell you something. When you replace a good six-figure income in this business and moving on to multiple six figures and eventually a seven-figure income, you will also have a negative about yourself. Forget about Amway. So when somebody says there is negative about Amway, I always tell them, forget about Amway having negative. I have negative about me on the internet. I talk about that. All right. So if you don't have negative about you on the internet, that means they're not done something big yet. Or because any time which is done big, there is always a negative. All right. So you are in the right company. Now, it may not be a perfect company. All right. No company is perfect. Google, Apple, they are great companies, but they are not perfect companies. Walmart is a great company, but they're not perfect companies. Amway is a great company, but not a perfect company. Okay, why? Every company has to evolve, right? Look at Google and Apple. They have paid fines in billions. Probably 1 year of Amway's revenue, Apple and Google might have paid in fines alone in different parts of the world. And they keep on doing it, right? In YouTube, YouTube is sued by one day by UK government, another day by US government. It's like crazy because of the copyright and because of all the pornography and all the bad stuff which happens on a YouTube platform. They get bounced back from different governments and they keep adjusting and tweaking and refining their search engines and whatnot. So even our business is a work in progress, just like you are work in progress. Okay, the business also is work in progress. So keep that in mind. And it's a privately held company. All right, it is not a public company. There are a lot of good things which happen with it. One day, I don't care where you are. Right now, you're probably listening from a faraway place or a close by place. But one day, I hope that you will, as a platinum anyway in North America, you will get this opportunity. But as a diamond in some other country, probably you will have an opportunity to come to America, to come to Ada, Michigan, and come and check the headquarters. And you will be really humbled the journey of how this company has grown. All right, we all should be very proud of that. Okay, so Amway, it's a great vehicle. Now, the uplines and the organization which you belong, which is a Brit Worldwide, Team One Global, Dream Team, and all your uplines, they're also not perfect. Work in progress. I remember my beginning days as a new upline.
in Wayne State University. I'm talking about many years back, decades back. And today, I would see, I would behave, I would respond, reciprocate very differently from how I did in the past. Why? Because over a period of time, I have evolved too. So give some wiggle room for your upline. To if tomorrow you might see your upline doing mistakes. Like let's say you are launched by a 300 PV or a 600 PV or 1,000 PV. Now, if you really see the scale of Amway business, where is 1,000 and where is a diamond, EDC, double, triple, and crown? Big difference. So your upline, even though it's 1,000 PV, okay, you will see him or her doing some mistakes. And you should not be holding them at gunpoint and literally kind of cutting that cord just because they have done some mistakes. All right, ask yourself a question. If they were a part of your downline, how would you see them? You would give them a little bit more wiggle room, a little bit more slack in and have more patience in dealing with them. So treat your upline also with the same kind of flexibility, okay, as you would treat a downline. All right. Now let's talk about you. Okay. Now you might be in your right now, let's say 20s, and building this business together. And I'm so proud of you that you are in your 20s and you had the guts to go through 5, 6, 7 step of process and get launched. You've done you conquered yourself. Whatever the small assignment which you have to do, reading books and 30-day core and whatnot, you did it. All right. And there is a lot of good in you. Every human being has a lot of good in themselves. But the beauty about this business is that this business brings that out, extracts that good and highlights it and brings it to the top. No other, believe me, no other business has that capacity to do that. You can make a lot of money selling real estate, selling stocks, selling something, selling this, selling that. But those economic vehicles will never have the capacity to bring the good in you. That is why you see a big matured IBO, okay, whether it is Jody Victor, who is a 4th generation or 3rd generation IBO, or whether it is a Kanti and Lata Gala, okay, now working on a 2nd generation IBO. We all want our kids to do what we do because of that very reason, because it brings the best. Okay, just like a rose, it has a lot of thorns you have to go through to get to the rose. Okay, anything good, you have to go through a lot of hardships. Same way our business. Okay, you have to go through a lot of hardships, but the end result, what you have in hand, is beautiful. Okay, not just the money component of it, the lot of intangible components of it. Okay, so if you're in your 20s building this opportunity, so proud of you. Congratulations. Now, at 20s, there are a lot of landmines in front of you, let alone Amway. Okay, doing the right stuff in the business, I mean, in the life itself is a big task. Forget about the business, take away the business, just your life with the job, with your own self, with your family, everything, navigating through life from 20s all the way to 60s, 30, 40, 50, and 60 is a big challenge. There are a lot of landmines. Okay, and your 20s, financial landmines, finance. Okay, if you are an immigrant, maybe visa situations, health situations. All right, so many things are there, so many moving parts, and though they all can be actually testing and challenging. Now you have to be aware of that those has to be navigated well, and we have a fantastic program, mentorship program to do that. Okay, I was guided and coached to become what I've become. Okay, can you believe that through this opportunity, by the time I was 31, I was financially free. Free when most people in America are looking for a job. I walked away from my job. At 33, 34, I was a millionaire. Okay, 37, 38, multi-millionaire.
Okay, and if not for this opportunity, we would not have what we have today. So I'm not here to say that everybody can do what I do, because I don't know what your commitment level, I don't know your guts within you to bring the best out of yourself. Only you can say that. But you can connect the dots by yourself and do it. I listened to 30, 40 rally stories of diamonds, and I literally learned and understood. And guess what? I constructed my own path in this business. All right. So you have the same opportunity. So if you're in 20s, temptations are there, parties, clubs, and stuff like that. But like many other speakers, you saw some of the young, energetic speakers in this. And now when you look at them and you listen to them, what comes to your mind? Wow, man, I want to make that sacrifice so that I can also become what they have become, right? I'm sure you feel that way. Even though I'm a lot older to a lot of them, I feel that, man, I wish I was in my 20s and listened to the speakers, and I would also do what they have done. So you have that opportunity. All right. Have that habit of eating salad before you eat dessert. 20s, 30s, and 40s are always about work, hard work, and hard work. All right. If you're prepared for that long haul, you'll never be tested that long. Be prepared. I was prepared to give 2 or 3 decades to become a big pin in this business. When I was prepared mentally for that long, I will never be tested. But some of you are probably saying, I'm ready to give whatever it takes for 2 years. That is a short period of time. It's like going to a karate school and saying, I want a black belt in 2 years. What is he going to say? Don't start here, go somewhere else. Because you can never earn a black belt. It's not about getting a black belt. It's about earning a black belt. It's about becoming a black belt. Same way here in this business. Some of you are giving deadline to Amway. If in 5 years, if I don't replace $100,000, I'm going to quit Amway. Did you say the same thing about your job? At the interview where you went for an interview, did you say that? In next 5 years, if I don't become a CEO and if I don't take your position, I'm out of here. Don't give me the job. Did you say that? Okay. Your tail was tucked below and your ears were nodding and your tongue was salivating in front of your interviewer, your boss. And you did everything and more. And you do it. Okay. And but here you give deadline to the business. Just because now the business is producing only $2 or $10 or $100 per month, and your job is producing $100,000, now you are discriminating the business because it is producing lesser income, so I can kind of kick it. Is that how you do? Even though the business is producing $100, you got to treat it like it is producing $100,000. That's how we saw it. I remember $125 I invested. I put a check. There was a Bank of Detroit, National Bank of Detroit, something NBD Bank, National Bank of Detroit. I still remember that. I had a checkbook. I put $125 and gave it to my upline, and I got registered. But I mentally, in my mind, I said to myself, I have not invested $125. I invested $125,000, and I want to get that back from Amway. That is how we did it. We held this business to a very, very high standards in our mind and in our actions. And a lot of the leaders whom you're listening, you see that. Okay, like they say, if you want to run a McDonald's franchise, you got to have ketchup in your blood. Same way, if you want to build bigger networks in Amway, you got to have PV in your blood. You can't have PV and TV. You got to have one. You can have whatever you want in life, but you can't have everything what you want in life. Okay, I live in such a beautiful neighborhood here. Every weekend, they have concerts in summer. And of course, right now we are in COVID, but if not for COVID, all the guys are in the concert, in their golf cart and having fun. And I'm out there going to Richmond, going to
Dallas, going to California, going to Chicago, going to Atlanta, all these things, even after becoming free. But don't feel bad for me. Okay, why? Because my weekdays are their weekends. All right, for me, I have 5 days to enjoy. In the weekday, I only see dogs and women walking the dogs. Why? Men are all gone to work. Okay, construction worker, pets, women, and us. That's it. We are the only people in this neighborhood. Rest everybody is gone to pay the mortgage, and we don't have a mortgage for this house. My biggest bill in this house is the electricity bill. I paid 700 last week. All right. So guys, choices what you create today for yourself, choices what you make will create new choices down the road. Make sure that when you have your choices today, they are done with a lot of understanding. Today you have a choice, okay, to pay attention to this particular Zoom session or just hang around loose like a spectator. You're not like a IBO. You're logging on, you're walking around, there are a lot of things happening, you're eating and this and that, and you're like a spectator. All right? This is like a road show for you. But some of you in this call, you are completely honed in. You know what you're doing. There is a mission here. There is a goal to accomplish here. And that's why results are different. Anyways, I can talk on and on, but I would like to have Rekha share few. She's actually waiting. When is this guy going to stop? You know, no, this is my first assignment, guys, of the week. Oh my God, what a powerful talk. You know what? I was thinking, oh my God, he has covered everything, you know. And so far, the panel and all the leaders who have talked, I mean, just amazing. I'm like, they have covered each and everything that I wanted to say today. I'm feeling just like that. But anyways, thanks to all the leaders so far who have, you know, made it so powerful. I'm pretty sure that many of them out there who are maybe new or who are still, you know, figuring out, they will be so, you know, they will take a lot from this webinar for sure. I would like to start with the statement like sometimes we are tested not to show our weaknesses, but to discover our strengths. So it's like, you know, most of the times when certain things happen in our life, okay, we can take it in business or in any aspect of our life. So we just think, you know, that either we take it as a success or we take it as a failure. So my thing is like, nobody can be as such a failure in one's life. I just want to make a little bit, throw a little bit light on it, what I'm trying to say. So failure is what? Like maybe we want to do something. In the beginning, we are very excited. We are really, you know, we feel, oh, wow, we will do it and this and that. And then slowly what happens is that for those things, for those goals, for those motives that you had to do, slowly and gradually the practical things come on your way, and you feel certain things, you know, are really difficult, or certain things you are not made to go through. You are not prepared, maybe mentally, physically, emotionally. But you know what? Whenever we fail only because of certain things we lack. Maybe knowingly or unknowingly also, like we might lack devotion, determination, dedication to that objective, or you know, we are not that focused, or our goal is not that enough in our eyes that could drive us day and night, you know, just, oh, yeah, we want to accomplish it, I have to get it. So my thing is like, okay, then one might decide, you know, oh, like maybe I'm failing in this venture or in this business or whatever. But it is never like that. If you just focus and try to remove those lack things, whatever we lack, and just add on to a little bit of those things, like be more focused, be more determined,
see your goal like in front of your eyes and just imagine that you just want to get it. So the things that were making you go fail, or people were thinking, or you might be thinking in yourself that, oh no, maybe it's hard for you to get it. The same thing when you to take out those negatives out of your way of doing it, and just add on little bit of those lacking, just remove those and just add on little bit of those perseverance, consistency, dedication, and most important thing is learning. Even if you feel that, oh, you're not getting it, you're still not there, or it's not happening, just go to your mentor or your teacher or guide, whosoever you feel that are there to support you, to help you. They exactly know from their experience, from their ways, that they can really help us. Just tell them, just be surrender yourself to them for certain time, and just do the way they want you to do. They are guiding you, because anybody who guides you, remember that he is a great well-wisher of you. That is why only he has chosen himself to be a mentor of yours. So that means that their intentions for you are really very good, and you want to utilize, and you just take it in any sphere of life. Maybe it is business, maybe it is some personal problems, maybe it is something emotional. These days, depression, oh my God, this is happening so much. So whatever it is, whatever it takes, just go talk to your guide and mentor, and just So yeah, I hope I did the justice to what I've said. Yeah. Thanks to you all. Awesome, great guys. I'd like to wrap it up by a few more points. A couple of things which has helped me personally in building a big Amway business. First of all is procrastination. That is luckily that is a habit which I left in my 20s, and I see people who have not accomplished much in life, they have accomplished a lot in procrastination. Okay, they have made procrastination their friend. The later syndrome has to go away for you to build an empire in any enterprise. All right, and even today, all right, you can check with Rekha. All right, let's say we are the night is done, I'm in the bedroom, and there is I forgot to put a laundry, let's say, for example, and I will right away get out of the bed and say, you know what, I did not put the laundry, I have to do it. So Rekha will sometimes say, you know what is the hurry, you're already in bed, you can do it tomorrow. I will still go out. And there are a lot of times like that. I still hold myself accountable to that very moment. I don't want to procrastinate. That is a big secret of millionaires. A lot of people want to have what other people have, but they're not willing to make those adjustments what other people have made to get there. Otherwise, dreams will only be dreams. All right, it will never come true. And same thing for you at your level in the business. Some of you are new. Now your upline has given you audio talk, but you said that I'm going to listen to it, but somehow you didn't listen to it. That procrastination. If you start giving yourself away to these things, you will start giving yourself away to much bigger things. Today, procrastinating and not listening to audio talk, you didn't lose much. But in the grand scheme of things, in next 10 years, if you were to go emerald and diamond, you would have made probably, let's say, $100,000 every year. I'll give a very conservative number. That's how much you lost. Because if you stitch all the bad habits, that is what led you or somebody to fading away from the business. If you stitch all good habits, that is what constructed a diamond. So if you're thinking that what I've lost is not much through procrastination, you are fooling yourself actually. You have lost a lot already. So that is something, and it has to be applied business, inside the business, outside the business, in your life in general.
Okay, whether it is cold day, whether it is a warm day, it doesn't really matter whether you are sick or not. You got to do what you got to do. All right, procrastination. Second thing is a focus and intensity. Nobody can give you these things. That is the internal fire which brings the focus. How can somebody teach you focus? It is silly. How can I make somebody want something more than what they want for themselves? Think about it. All right, that is you should act like an adult in this area. You can't act like a toddler or a young boy, 10-year-old or something like that, who is distracted all the time. You're an adult. That's why you're logged on with your own email ID. So how can you, sometimes some of you who have kids here or nephews and nieces, you got to do what you have told them to do. And that is how you become a better IBO. All right. Next thing is a work ethic. If the work ethic doesn't match your dreams, the dreams will match your work ethic. This is true for anybody at every level. So you got to back it up with a work ethic. The sheer work ethic is a great wealth equalizer. Lot of people in this business opportunity have brought up being underprivileged, in the sense that we are not gifted with the charisma. We are not gifted with the way somebody else can articulate a talk. A lot of us are like that. I feel in my case, I fall in that basket. But whatever has been that deficit, you double down with the work ethic and make it in your favor. And history has shown so many people reaching the top because of that. So if your work ethic doesn't match your dreams will automatically match your work ethic. Okay. Hopefully this is enough content for you, but we will be missing you in the 600 PV. If you're not a 600 PV, that's a subscription based qualified event. But rest of you, I wish you the very best. I hope that we will have a chance to shake hand with you, listen to you, know you a little bit more. And as you climb up and join the Platinum Club and Emerald Club and Diamond Club, hopefully we'll have a time to spend time with each other, maybe in a hot tub, maybe in a pool, or maybe in a cruise, or wherever Amway takes us, and get to know your family better. Okay. And with that, I'm done, and back to the host. Very, very happy good morning. Myself, Bhaskar Pandey, by profession advocate, आज listening together में आप सभी का होस्ट. दोस्तों, आज this couple, young and energetic speaker, गणेश सोनाय and रेखा सोनाय को हम लोगों ने सुना, और ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड एंटरप्रेन्योर स्पीकर एंड बिजनेस कोच. ये हम लोगों का बहुत सौभाग्य है कि हम लोग ऐसे मेंटार को लिसनिंग टुगेदर में अपने अपलायंस एंड मेंटार्स के द्वारा हम लोगों ने इस ऑडियो को, इस टॉक को सुना. हम ये विश्वास करते हैं कि आज इस टॉक से नो डाउट जो न्यू पार्टनर ओरिएंटेशन टाइटल से ये टॉक हम लोगों ने सुना, ये केवल न्यू पार्टनर के नहीं बल्कि सभी के लिए था. उन्होंने जो की हम लोगों को दिया, जो उन्होंने मैसेज दिया, ये वास्तव में हम लोगों की ग्रोथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. और दोस्तों, उन्होंने कितनी बढ़िया चीज कहा कि आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी कहाँ है.
इस चीज को बहुत ही जोरदार शब्दों में उन्होंने कहा कि एमवे बिजनेस, एमवे प्लेटफॉर्म इज बेस्ट ट्रांसफरेंस प्लेटफॉर्म। सो हमारे बीच ज्योति रंजन सर ने हैंड रेज किया है, हम उनकी विजडम को सुनेंगे। सो मोस्ट वेलकम ऑन डिजिटल स्क्रीन सर। थैंक यू भास्कर सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस टॉक को प्ले करने के लिए। और मैं अपने बारे में बताऊं, मैं ज्योति रंजन, मैं मुंबई से हूं और एक एचआर एंड बिजनेस मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूं। एक कंपनी का हेड ऑफ एचआर हूं और यहाँ पर एक बहुत ही प्राउड एंड पैशनेट बिजनेस ओनर हूं। अब थोड़ी सी रूटीन में चेंज करी मैंने। मैं मॉर्निंग वॉक मेरी जो थी वो बंद हो गई थी। मॉर्निंग की एक्सरसाइज और एक्टिविटी थोड़ी सी होती थी जो घर के अंदर होती थी। सो एक डे, कौन से डे को हम ब्रेक करते हैं, उस अपनी डिजायर्ड हैबिट के लिए आप अपने आप को कैसे ब्रेक करते हैं। सो आई ब्रोक इट टुडे। और पूरी टॉक मैंने शिनॉय सरन मैम की पूरी टॉक मैं वॉक करते हुए सुना, थोड़ी एक्सरसाइज करते हुए सुना। एंड देन एक चीज हुआ कि मैं 8वें फ्लोर पे रहता हूँ, तो अगर लिफ्ट से आऊंगा तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं 8 फ्लोर चढ़ के आया सीढ़ी से, नॉन स्टॉप, बिना हाफे हुए आपके सामने बैठ। दिस इज द पावर, दिस इज द पावर ऑफ दिस एसोसिएशन, दिस इज द पावर ऑफ दिस दिस कम्युनिटी, जिसमें कि हम पहले मैं सोच रहा था कि शायद गड़बड़ होगी, लेकिन वही था कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। मैंने कहा गड़बड़ नहीं होगी। बिना रेलिंग पकड़े नॉन स्टॉप मैं 8वें फ्लोर पे आ गया। कल की बात बताऊं, कल हमारी टीम में एक ज्वाइनिंग हुई, एक ऑनबोर्डिंग हुई है। आज उनको एसएसआई पे उनको स्टार्ट कराना है। और ये मॉर्निंग मिरेकल लिसनिंग टुगेदर का जो इम्पैक्ट रहता है हमारे लाइफ में, वो बहुत ही पावरफुल है। एंड थैंक यू सो मच नलिन मिश्रा सर, थैंक यू सो मच आलोक सर फॉर क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म, फॉर क्रिएटिंग दिस अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू यू भास्कर सर। थैंक यू सर। ये बिल्कुल झलक रहा है आपकी पर्सनालिटी देख करके, और बिल्कुल सही है कि हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, एनवायरनमेंट, नेचर वही हमें देता है। सो थैंक्स अ लॉट दोस्तों। अब हमारे बीच जयलाल सर ने हैंड रेज किया है। सो मोस्ट वेलकम ऑन डिजिटल स्क्रीन सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आप अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं सर। और सीडी में बहुत अच्छा इंग्लिश में तो था, लेकिन हम लोग उतना समझ लेते हैं, उतना ढंग से बोल नहीं पाते, लेकिन सीख तो लिए ही हैं। तो बहुत अच्छा लगा उनका जो कहने का तरीका था, जैसे हम लोग की सोसाइटी में है कैसे ग्रो करेंगे। बहुत अच्छे से डायमंड की कहानी सर ने बताया और अपने बारे में बताया कि कैसे इसको ग्रो किया जा सकता है। तो इस तरह से बहुत अच्छा लगा। और कल का एक्सपीरियंस बताना चाहूँ, कल संडे था, कल बहुत अच्छी अच्छी मीटिंगें थी। सर की मीटिंग में हम 5:30 बजे अपने साथियों के साथ उपस्थित थे और बहुत अच्छा लगा। हेल्थ वाला सेशन बहुत ढंग से सब सुने लोग। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ वो लोग आए थे, उनको डेमो भी किए और कुछ जो है ऐसे ऐसे प्रोडक्ट उनको डेमो किए, बहुत प्रभावित हुए। विटामिन सी को जो जादू उनको दिख रहा था कि यार कैसे सफेद हो गया पानी आपका। तो इस तरह से बहुत अच्छा लगा। और एप्सा80 का डेमो दिखाए। और अभी सुबह सुबह जो है अभी स्कूल बच्चे छोड़ के आ रहे थे, तो हमारे घर पे 2 लोग बैठे थे कि हमको ग्लिस्टर चाहिए, उनको पायरिया का थोड़ा प्रॉब्लम था। कोई बता दिया था कि जयन लाल जी के पास वो प्रोडक्ट है, वो उससे आप ठीक हो सकते हैं। तो उनको मैं विटामिन सी जो है 10 दिन का दिया हूँ खोल करके, और एक ग्लिस्टर बड़ा वाला दिया हूँ, फोटो भी ग्रुप में डाला हूँ। ये सर एक्सपीरियंस है। थैंक यू सर। ग्रेट सर, ग्रेट। बिल्कुल आपने सही, मेरे भी हिसाब से उनको अगर पायरिया है तो हम भी यही ग्लिस्टर और विटामिन सी देते हैं, और साथ में ये भी कहते हैं कि इसको आप चूस करके अगर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा काम करता है। और एक जानकारी और भी देना चाहूँगा कि विटामिन सी अगर दांत में दर्द भी होता है तो उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। इसको मैंने एक्सपीरियंस लिया है कई लोगों के बीच में। सो अब हम चलते हैं अपने इस टॉक पर। और आज जब हम स्पीकर को सुन रहे थे तो उन्होंने कितना बढ़िया एक चीज कहा कि आज जहां भी होए, गवर्नमेंट जो है वहां की सरकार वो मैंडेट करती है, बहुत सारी चीजों को कहती है कि इसको आप करें। जैसे एक टर्बो इंजन की बात किया उन्होंने कि इको होना चाहिए, जस्ट लाइक
आवर बिजनेस एमबे कॉरपोरेशन, हम सो ग्रेटफुल और धन्य हैं। यहाँ की जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो चाहे होम केयर के हो, चाहे पर्सनल केयर के हो, चाहे हेल्थ केयर के हो, ऑल आर इको फ्रेंडली। सो ये एक यूनिक, और हम लोग एक भगवान की कृपा है, हम उनके शुक्रगुजार हैं, अपने अप्लायंस के शुक्रगुजार हैं कि आज ये प्लेटफॉर्म हमको मिला है। सो और उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज कहा कि अगर कोई दिक्कत आती है या हमको इस बिजनेस में और ग्रो करना है, तो हम अपने अप्लायंस, अपने मेंटार के प्रति सरेंडर करें। एक शब्द उन्होंने बहुत गजब का प्रयोग किया, प्रीकैस्टिनेशन। आज मैं अपने को स्वयं इस चीज को पाता हूं कि आज जो भी कहा जाता है उसमें हम लोग टाल-मटोल कर जाते हैं। अगर हम यहाँ पर ग्रो चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, तो हमें इस शब्द को अपने माइंड से, अपनी डिक्शनरी से हटा देना होगा। सो मैं बहुत सारी बातें आपसे करूंगा, और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर और जितने लोग हैं उन्होंने क्या टेक अवे लिया। अगर उनके हैंड रेज नहीं है तो मैं आपके बीच बोलता रहूंगा, और समय चूंकि हमारा बहुत तेजी से जा रहा है, तो हम अपने आगे पायदान पर चलते हैं। हमारे बीच सुरेश द्विवेदी सर ने हैंड रेज किया। सर मोस्ट वेलकम ऑन डिजिटल स्क्रीन। थैंक यू भास्कर जी, थैंक यू वेरी मच। आज जो दो बातें, जो एक तो बहुत अच्छी चीज समझ में आई कि इन्होंने कहा ना कि आप अपनी जो बैड हैबिट्स को अगर स्टिच करेंगे, स्टिच ऑल योर बैड हैबिट्स यू लीड टू फेलियर, स्टिच ऑल योर गुड हैबिट्स यू लीड टू सक्सेस। जो छोटी छोटी हमारी आदतें हैं, जो जिसमें एक प्रोक्रेस्टिनेशन की बात है, या इस तरह की आलस करना या वो करना, जो भी इस तरह ये छोटी छोटी आदतों को अगर हम स्टिच करते जाएं तो फेलियर की तरफ ले जाती है। और अगर हम छोटी छोटी अच्छी आदतें, छोटी छोटी रोज हमको, अगर 30 पीवी की बात है, अगर रोज 30 पीवी हमको करना है, छोटी सी एक आदत है। रोज सीडी सुनना है, रोज लिसनिंग टुगेदर में रहना है, एक छोटी सी आदत है। इस तरह की छोटी छोटी आदतों को करते हैं, दैट विल लीड टू यू सक्सेस के लिए। और दूसरी बात है कि उन्होंने बहुत अच्छी कही थी कि आपकी जो हैबिट है ना, वो अगर मैच नहीं कर रही आपकी ड्रीम के साथ, आपकी वर्क एथिक्स अगर मैच नहीं कर रही ड्रीम के साथ, तो आपकी ड्रीम विल मैच करेगी आपकी वर्क एथिक्स और आपकी हैबिट्स के साथ। तो दीज आर द टू थिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात कही। थैंक यू भास्कर जी, बैक टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने वैल्यूएबल मैसेज हम लोगों को दिए, और मैं जब इनको सुन रहा था और इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा भी, सो हमारे बीच मुकेश सिंह ने हैंड रेज किया। सर मोस्ट वेलकम। ओके, गुड मॉर्निंग आप सभी को, हैप्पी गट गुड मॉर्निंग। और रियली आज की सीडी बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। क्योंकि हमें डेली कुछ ना कुछ हम टेक अवे लेते रहते हैं और पूरी टीम साथ हम काम करें। मैं नहीं था कि अभी से सर ने, डॉक्टर साहब ने बोला कि देखो हमारे जो स्टेप कहीं भी हम जगह जाना है, कहीं भी जाना है, तो मतलब डायरेक्ट हम वहाँ पे नहीं जा सकते, ठीक है। मतलब एक एक कदम करके अगर बढ़ाते हैं, एक एक पॉइंट करके बढ़ाते हैं, तो जरूर हम सक्सेसफुल होंगे। मतलब एक एक स्टेप हमें चल, एक बहुत बड़े लीडर का कहना कि अगर चल नहीं सकते ना, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलना सीखो, चल नहीं सकते तो घिसटना सीखो, घिसकना सीखो, ठीक है। तो इसी तरह हमें घिसकना तो पड़ेगा। अब भी हम अगर खिसकना आ जाएगा, जैसे बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, पहले खिसकते हैं, फिर खड़ा होते हैं, धीरे फिर चलने की कोशिश करते, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह हमारे लिए कि एक डेली हमें कुछ ना कुछ हमें करते रहना है, डेली कुछ ना कोई एक्टिविटी हमें करते रहना है। तब जाके हम अपने जो भी हमारी क्या आपका ड्रीम है, जो भी हमारे एम है, उद्देश्य है, इस महीने का, इस साल का, वो हम वो हम अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज हम मतलब कभी करना पॉसिबिलिटी नहीं होता है कि अगर डे बाई हम नहीं करें, रेगुलर नहीं करें तो ये है कि हर एक डेली हमें छोटे छोटे पॉइंट करते रहना। ऑलरेडी हम कर भी रहे, टीम के साथ मिलके कर, तो ये मेरा था। कल के मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ। हमारे घर पे कुछ गेस्ट आए, ठीक है। तो उनका कहीं टूर एंड ट्रेवल्स का आपका प्लान बना। तो अचानक हमने बोला कि आप लोग जा रहे हो, तो हमने कुछ मल्टीविटामिन उनको दिया, और आपका अश्वगंधा था, एक दो प्रोडक्ट और भी हमने उनको दिया।
तो उन लोगों की काफी टायर्ड हो गए, काफी थकावट हो गई, साथ में वाइफ भी थी उनके साथ में। तो बोले काफी थकावट हो गई भाई, ये चीज है वो चीज। तो उन्होंने लिया और काफी रिलैक्स रिलैक्स फील किया, उन्होंने काफी चिल लेने रिलैक्स फील किया। पहले तो मतलब पहले तो कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया इससे कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी, ऐसा तो नहीं है। हमने नहीं, कोई दिक्कत नहीं है कि आप लो और ज्यादा बेनिफिट और ज्यादा मतलब रिलैक्स फील करेगा, आप फ्री अपने आप को फ्री फील करोगे। तो उन्होंने लिया और लेने में ठीक ठाक है। ये मेरा कल का एक्सपीरियंस। थैंक यू, बैक टू। थैंक यू मुकेश जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और जब आज ये स्पीकर बोल रहे थे तो उन्होंने मीडिया की बात किया कि मीडिया में बहुत सारी चीजें निगेटिव आती रहती हैं, तो हमें उन पर ध्यान नहीं देना है, हमको पॉजिटिव सोचना है, नॉट निगेटिव। इस चीज को भी उन्होंने एक जबरदस्त मैसेज दिया और कहा कि वी आर इन राइट कंपनी, राइट प्लेटफॉर्म। सो मैं जब इनके बारे में पढ़ रहा था एक जगह, उन्होंने एक बढ़िया चीज कहा कि फ्रीडम इज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ए प्रिविलेज। बहुत बड़ी चीज उन्होंने कहा। सो हमारे बीच हम लोगों के कोच नलिन सर ऑन डिजिटल स्क्रीन, थैंक यू मोस्ट भास्कर जी। वेलकम। एंड मैं हूं डॉक्टर नलिन मिश्रा, पेशे से सर्जन हूं फ्रॉम प्रयागराज। और आज की टॉक यंग लोगों के लिए थी। ये गणेश शनाव जी का जो बिजनेस है कोविड के टाइम की थी। इसमें ढेर सारे यंग लोग हैं जो आप सबने सुना होगा प्रोसेस, उसके थ्रू आते हैं। 6-7 स्टेजेस होती हैं प्रोसेस की, उसको पार करके आते हैं। एंड ही वॉज टॉकिंग टू देम अबाउट आवर बिजनेस। सबसे पहले उन्होंने कंपनी की बात की, अप्लायंस की बात की, फिर उनकी बात की। कंपनी बहुत बड़ी है पर परफेक्ट नहीं है। अप्लायंस सक्सेसफुल हैं, दे नो अ लॉट बट दे आर नॉट परफेक्ट। यू हैव टू लर्न, चीजें देखनी है, सुननी है। और मुझे आश्चर्य हो रहा था कि वो सारी चीजें ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज न्यू पार्टनर, अबाउट यंग पार्टनर, लेकिन वो सब हमारे ऊपर भी फिट होती है। फिट क्यों होती है? क्योंकि हम लोग आ गए बस बिजनेस। किसी को दोस्त के कहने से आ गया, किसी को पकड़ के ला गया, किसी को। आज भी हम लोग कहीं ना कहीं उसी तरह काम कर रहे हैं। कोई ज्वाइन करने के लिए तैयार होता है, एकदम हम खुश हो जाते हैं, जल्दी से उसकी ज्वाइनिंग कराने लगते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इन सारे जितनी भी उन्होंने बातें की, इसके ऊपर हमें चैलेंजेस फेस करने होते हैं। हम उन्हें समझाते रह जाते हैं कि कंपनी कितनी बड़ी है। हम उन्हें समझाते रह जाते हैं कि देखो, अगर आपको कामयाब होना है तो, किसी भी फील्ड में कामयाब होना है तो आपको मेहनत करनी होगी। उसी तरह से यहाँ पे भी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड इट वॉज अ फैंटास्टिक टॉक। इसको बार बार सुनने की जरूरत है, स्पेशली नए लोगों से जब हम बात करें, जो हमारे नए पार्टनर्स बनने वाले हैं। तो किसी ने अपने शब्दों में इस चीज को समझकर ये बातें हमें उनके साथ करनी होगी कि आपने कोई छोटी मोटी चीज नहीं ज्वाइन की। और ये कोई ऐसा नहीं कि आपके लिए कुछ अ, खास कर नहीं सकता लाइफ। ये आपके लिए क्या क्या कर सकता है, बट कंडीशन ये है कि आपको उसी तरह से मेहनत करना होगा जैसे किसी और फील्ड में जाके आप एक्सेल करना चाहते हैं। कोई भी यहाँ ऐसा नहीं कि कोई शॉर्टकट है, इतने में ही हो जाएगा। लेकिन हम में से 90% लोग, जो मेरा अनुभव है, एक तो इस बिजनेस को छोटा बिजनेस समझते हैं। ये यूं ही हो जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं उनके मन में उम्मीद रहती है। और इसकी जो लर्निंग्स हैं, जो टीचिंग्स हैं, उनके ऊपर फोकस नहीं। जैसे एक बड़ी सिंपल सी बात है, प्रोक्रेस्टिनेशन। हम सब अपने आप को एनालाइज करें कि क्या हम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते। और आप देख लीजिए, किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को आप थोड़ा ऑब्जर्व करके देखिए, उसकी जो टू डू लिस्ट होती है वो पूरी होनी ही होनी है। जैसे वो बता रहे थे कि रात में मैं अगर सोते समय मुझे याद आया कि कुछ चीज छूट गई तो मैं उठ के कंप्लीट करता हूँ। तो दोस्तों, ये सारी क्वालिटीज हैं, जब हमारे भीतर आती हैं तभी हम बड़े लेवल्स की ओर बढ़ते हैं। अदरवाइज तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, उतना तो हो ही जाता है। आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, थोड़े से रिकमेंड कर रहे हो, कुछ 4 फिगर 5 फिगर की इनकम हो ही जाएगी। बट 6 और 7 फिगर्स की इनकम चाहिए, तो ये सारी जो क्वालिटीज हैं एक एंटरप्रेन्योर की, एक सक्सेसफुल मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स की, ये क्वालिटीज हमको अपने अंदर लानी है। थैंक यू भास्कर जी, बैक टू यू।
आपने बहुत ध्यान से सुना है टॉक को और पॉइंट्स बनाए हैं। बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल सर, आपके मैसेज से ये लगा कि इट्स अबाउट बिल्डिंग योर सेल्फ। तो थैंक यू सर अलॉट। और अब हम ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे बीच मेंटर्स ऑफ द मेंटर आलोक उपाध्याय सर हैं। मोस्ट वेलकम ऑन डिजिटल स्क्रीन सर। थैंक यू भास्कर जी, बहुत ही जबरदस्त टॉक है ना। और बिल्कुल देखिए, जो सबसे पहली चीज हमें समझ में आती है कि ये बिजनेस जब हम समझ के करें, है ना, तो टाइम कितना भी लगे हो जाएगा। और इससे ये समझना है हमें दोस्तों कि जब कोई जुड़ जाता है बिजनेस में तो बात खत्म नहीं हो जाती है, वहां से बात शुरू होती है ना। ये अलग फेज है, इसको अलग फेज की तरह समझिए। जैसे उदाहरण के लिए आपको शॉपिंग करने जाना है, तो सबसे पहले आपकी एक यात्रा शुरू होती है जो मॉल तक जाती है, ठीक है। वो एक अलग यात्रा है। और फिर मॉल के अंदर जाने के बाद जो यात्रा होती है वो अलग यात्रा होती है। थोड़ा सा एनालिसिस दे रहा हूँ इसलिए कि थोड़ा आसान हो जाता है समझने में, है ना। तो ऐसे ही जब कोई व्यक्ति जुड़ता है तब तक का प्रोसेस अलग है ना, और उसके बाद का प्रोसेस अलग है। यदि उसके बाद का प्रोसेस हम ढंग से नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, लोग आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे। और जो हो रहा है सबके साथ आप देखेंगे, ज्यादातर लोगों के साथ में जितने लोग आए उसमें से बहुत सारे चले गए, थोड़े से बचे हैं। पता है कौन लोग बचे हैं? जिनको वो सेकंड प्रोसेस अलग तरीके से किया। और उसी की मीटिंग थी जिसको हम लोग NDOP बोलते हैं, एमबीबी कराती रहती है, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, है ना। और ये लीडर्स भी करते हैं अपनी तरफ से। नेचुरली जो ट्रेनर करता है तो वो अलग तरीके से करता है, लीडर थोड़ा उसके अंदर भाव अलग होता है ना, क्योंकि उसकी टीम का हिस्सा है वो सब जो है। और कितनी अच्छी चीज देखो, आप देखा उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा देखो मौका मिलेगा तो कल जब आप प्लेटिनम फाउंडर प्लेटिनम बन जाओगे तो हम लोग किसी पूल में मिल सकते हैं, किसी ALS में मिल सकते हैं, है ना। उन्हें भी पता है कि वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि उन्हें पता है कि सारे लोग वहां तक क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है दोस्तों कि हु एम आई। पहले तो अपनी गारंटी लो कि क्या मैं वहां तक पहुंचूंगा कि मैं हाथ मिलाऊंगा इनसे, बस। ये कमिटमेंट जिस दिन आपने कर लिया, फिर बाकी चीजें तो फिर नेचुरली सीखी जा सकती है ना। जब कहीं जाना होता है तो रास्ता तो मिल ही जाता है ना। पहली बार जब आप कहीं जाते हैं तो रास्ता मिल ही जाता है, सबको मिल जाता है। जिस पे पैसा नहीं है, जिसको बॉम्बे जाना है ना दोस्तों, भिखारी भी होगा वो बॉम्बे मिलेगा कुछ दिनों में। भिखारी सोचो उस पे कुछ नहीं है, उसे कोई लिफ्ट देने वाला नहीं है, उसे कोई स्पॉन्सर करने वाला नहीं है, लेकिन वहां मिल जाएगा। आश्चर्य नहीं होता बहुत बार? बताओ, कितने सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे हैं। तो और जगह क्योंकि हमारी जिद होती है कि नहीं हमें जाना ही जाना है तो रास्ते खुलते हैं। यहाँ पर शायद वो जिद नहीं होती है क्योंकि ज्वाइन करते समय जिद नहीं थी ना। ज्वाइन तो आपको कराया गया, आप थोड़ी करना चाहते थे। तो इसीलिए सबसे पहली चीज, जब हमने शुरू किया इस बिजनेस को तो वी मेड श्योर कि हम क्विट नहीं करेंगे। हमें समझ में आ गया। हाँ, अब यदि मेरे को अगली यात्रा जल्दी जल्दी करनी है, जो कि मुझे लगता है आप सबको करनी है ना, जल्दी जल्दी हम प्लेटिनम फाउंडर प्लेटिनम एमरेल्ड डायमंड की यात्रा खत्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? हमें जितनी भी मेहनत आपकी अप्लाइंग कर रही है उसके अलावा कुछ करने की सोचनी पड़ेगी। जो कुछ भी आपके अप्लाइंग कर रही है दैट इज वेल एंड गुड, बट उनका एक अलग एज है, उनकी अलग जरूरत है ना। हो सकता है वो लोअर कैटेगरी में हो सकता है वो आज उतना सीरियस ना हो, किसी फॉर एनी रीजन, दैट इज देयर राइट, वो उनका राइट है ना। जैसे हम लोग मानते हैं ना कि भाई आपकी यार दोस्तों में बहुत सारे लोगों की प्रायोरिटी अभी हेल्थ नहीं होगी, है ना। तो ठीक है, वो उसकी चॉइस है। हम क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं उनसे? नहीं करते। रोज फोन करके बोलते हैं उसको कि तुम जिम जाना चाहिए यार, वॉक तो करते ही तुम, अभी तो ठीक हो कल कुछ हो जाएगा, बोलते हैं? कभी कभी भी नहीं बोलते, क्योंकि हम वो बोलते हैं उनकी। इनफैक्ट बोलने से भी क्या होगा, आप अपने बच्चों को जिम तक ले जा तो सकते हैं, एक्सरसाइज तो नहीं करनी पड़ेगी ना, है ना। और आप सोच रहे हो मैं तो रोज जाऊंगा, लेके जाऊंगा, अपने सामने देखूंगा तो भी कुछ नहीं होगा, तो करके देख लिया हमने भी बहुत कुछ। हम सबने अपने अपने बच्चों को टॉपर बनाने की कोशिश की होगी, कितने बना पाए? और जो बना पाए उनको भी पता है कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। ऐसा नहीं कि वो सुपर डैड और सुपर मॉम हो गए, कुछ नहीं। यदि इतना हो गए तो हमारे बच्चे को ले लो भाई और करा के दिखा दो। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, है ना। और इसीलिए बहुत ह्यूमिलिटी होती है जब हम लोग ये देखते हैं कि हम इतना इम्परफेक्ट होने के बाद भी यहाँ तक पहुंच गए, क्योंकि हमें पता है कि इसमें बहुत सारी चीजों का हाथ रहा है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहली चीज,
decide for yourself. Definitely you have taken a decision. This is the reason why you are showing up every day. आप रोज क्यों दिख रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए दिख रहे हैं। अब है इसके बाद की जो प्रक्रिया है दोस्तों, मान लिया कोई जुड़ गया आपके साथ में, अब क्या करना है उसके साथ में, ये जरूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कि उसके बाद फिर हमारे पास कोई ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। जैसे मैं आपसे बोलूं, चलिए मेरे साथ कोई जुड़ गया, आप बताइए क्या करना चाहिए इसके साथ। तो आपके पास 1 2 3 4, जैसे लोन लेने जाते हैं ना, वो आपके पास चेकलिस्ट देता है, ये लो जी, ये पेपर दे दो, ये 2 साल की आपकी बैंकिंग होनी चाहिए, पिछले 3 साल का ITR होना चाहिए, फॉर्म 16 होना चाहिए, और ये एक आधार कार्ड होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ये होना चाहिए, फिर आगे प्रक्रिया। ऐसा होता है कि नहीं होता चेकलिस्ट? तो ऐसे आपके पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। उस चेकलिस्ट में सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि मेरे को इसको प्रोडक्ट पे लेके आना, सबसे पहले। क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज जो डिफरेंशिएट करता है हमारा बिजनेस, वो है प्रोडक्ट, है ना, हाउ वी आर डिफरेंट। और वो एक ऐसी चीज है जो कि वो ऑलरेडी कर रहा है, सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि उसको दिक्कत नहीं होगी इसको चेंज करने में, तो जो कर रहा है पहले से। वी आर नॉट आस्किंग देम टू डू समथिंग डिफरेंट, वी आर सेइंग यू चेंज योर ब्रांड, दैट्स इट। हम उसे नया काम करने को नहीं बोल रहे दोस्तों। जब मैं बोलता हूँ कि इस चीज से कपड़ा धोना है आगे से आपने, तो उसको कपड़ा धोना नहीं सिखाना है मैंने, वो तो आता ही है उसको, वो तो धो ही रहा है, तो वाय तो उसका क्लियर है। और आप यकीन मानो दोस्तों, यदि ये वाला काम हमने ढंग से करा दिया, और यदि वो कमिटेड हो गया कि अब मैं तो अपने घर में यही यूज करूंगा, उसके बाद दूसरा काम फिर हमारा होना चाहिए। और डेफिनेटली ये इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आपके दिमाग में यदि ये होगा ना कि एक आदमी एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कल, वो एक आदमी नहीं है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, तो आपको टाइम लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। फिर हमें देना उसे बिजनेस माइंडसेट कि एक्चुअल में है क्या बिजनेस, जो आपको पता है ना, वो जो आप जानते हो उस बिजनेस के बारे में, यदि वो आप वहां तक ले आए, वो बिलीफ ले आए, फिर हो गया आपका बिजनेस, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। और इसमें आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो सामने वाला, मान लिया आपको लग रहा है कि अभी वो तैयार नहीं है सुनने को, तो आपको ढील लेनी पड़ेगी वहां पर। बहुत बार हम वहां भी गड़बड़ कर देते हैं कि एक आदमी बहुत खुश होता है, बोलता हाँ सर मेरे को करना है, अब आप उसको मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, बस खत्म, उसका इंटरेस्ट ही लूज हो गया। समझना पड़ेगा दोस्तों। और जिस दिन आपको ये डर जब तक नहीं होगा ना कि मैं आई मे लूज अ डायमंड, तो आप बहुत डेलिकेटली उसको संभालेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है दोस्तों, जो जुड़े इस बिजनेस में 2 साल 3 साल 4 साल बाद एक्टिवेट हुए और डायमंड बने। ये समझ जिस दिन आ गई, और जो सबसे बड़ी चीज, हमारे एक लीडर है जो बार बार, बड़ी अच्छी लाइन उनकी मेरे को लगती है, और ये सबको पसंद भी आता है। वो बोलते हैं कि, देखिए बड़ी अच्छी लाइन है, वो बोलता है कि मेरे को आप मिले, और ये दिल से बोलते हैं, वैसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, कि मेरे को आप मिले और आप बहुत अच्छे हैं और मैं आपको लूज नहीं करना चाहता, कुछ भी हो जाए, बिजनेस हो ना हो, लेकिन मैं आपको लूज नहीं करना चाहता। कितनी जबरदस्त चीजें सोच के देखो। आज भी जो आपके ऐसे लोग हैं जो आज अभी काम नहीं कर रहे हैं, यू कनेक्ट विद देम एंड टेल देम आई डोंट वांट टू लूज यू, नॉट फॉर बिजनेस, एज अ फ्रेंड। आप देखना फिर क्या हो, है ना। क्योंकि जितने भी ऐसे लोग हैं ना दोस्तों, जिनके साथ लोग जुड़े रहे फॉर एनी रीजन, उनका टाइम आया कोई ना, कोई एक मीटिंग, कोई एक सीडी, कोई एक लाइन, कोई एक बुक, और कभी कभी तो कोई और व्यक्ति उनको समझा के जाता है। लेकिन मैंने पहले भी बोला होगा आपको, ऐसे भी एग्जांपल है दोस्तों कि जिनको किसी और ने बाद में समझाया कई सालों के बाद, और उनको ध्यान आया कि नहीं नहीं, मेरे को तो उसी के साथ जुड़ना है जिसने मुझे समझाया था पहले, क्योंकि मैंने ही नहीं समझा। आप समझ रहे हैं ब्लेसिंग कहां से आ सकती है। तो आप सोच के देखो दोस्तों, क्या है ये बिजनेस, इतना बड़ा बिजनेस हो सकता है ना। और मैं तो हमेशा ये मानता हूं दोस्तों कि मेरे कारण से लोग बिजनेस में आए जरूर, लेकिन मेरे कारण से जाना नहीं चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, और इसीलिए हम बोलते हैं कि अपने काम के साथ साथ इसको कीजिए, बिकॉज समटाइम्स इट मे टेक टाइम, है ना। कि आपके वो जो लीडर्स हैं, जो अच्छे वाले लीडर्स हैं, वो आपको दिख पाए, वो उस प्रोसेस में आ पाए, और वो भी अचीवमेंट करने लगे, BFI BBI, तब उसमें कभी कभी टाइम लग जाता है, समटाइम्स इट टेक्स ईयर्स। बट कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, है ना। ये हम अपने लिए भी बना रहे हैं, अपनी अगली जनरेशन के लिए भी बना रहे हैं। बट मैं फिर बता रहा हूँ, यदि आप अपनी अपलाइन जो भी कर रही है उसके अलावा भी कुछ करने को तैयार है इस बिजनेस में, का मतलब बहुत फास्ट हो सकता है बिजनेस, है ना। और आपका बिजनेस वहां से शुरू होता है जहां से आप शुरू करते हैं, आपका जो ADSP नंबर है, ABO नंबर है,
यू आर द CEO ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अभी वो ऑर्गेनाइजेशन दिख नहीं रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बिल्ड करेंगे, पूरा सिस्टम ये बनाया इसलिए गया, इस सिस्टम का और कोई मतलब नहीं है। इस सिस्टम का मतलब ये है कि आप एक बहुत सुंदर सा नेटवर्क बना सकें और जिसमें सब लोग खुश हों, बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं और आप भी इन रिटर्न पैसा कमा रहे हो। यदि इस सिस्टम में आप हैं और ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी दोबारा से आपको सोचने की जरूरत है कि कहां पर वो मिसिंग लिंक, राइट। तो थोड़ा सा समय था, मुझे लगा कि बात करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा दोस्तों बात करके आपसे। बहुत जबरदस्त जबरदस्त ऑफर चल रहे हैं, है ना। कल भी मैंने एक रिकॉर्डिंग भेजी थी शाम को डिजिटल कनक्लेव की, आप देखिए फाउंडर एमरल्ड, है ना। आप देखेंगे आपसे स्मार्ट तो नहीं है, कहीं दूर दूर तक भी नहीं, लेकिन डिटर्मिनेशन थी उनके अंदर, विजन था उनका, तो फाउंडर एमरल्ड होगा, है ना। यही सब आपके साथ भी हो सकता है दोस्तों, छोटी छोटी जगह से हो रही है चीजें, है ना। सबसे बड़ी चीज है दोस्तों अंदर से कैसे हैं। यदि अंदर से स्ट्रांग है, स्ट्रांग मतलब विल पावर है आपकी, नोबडी कैन स्टॉप। तो मी एंड भावना आर ऑलवेज विद यू। हैव अ ग्रेट डे अहेड, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू भास्कर जी, डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा सर, दीप्ति सर, एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एलार्ट सर, आपने बहुत ही वैल्यूएबल मैसेज हम लोगों को दिया। इसके लिए हम अपने पूरी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम अंतिम दौर में आप सभी को अनम्यूट का रिक्वेस्ट दे दिए हैं और यूनिवर्स को अपने स्लोगन देंगे 3 पर। 1 2 3। I'm a diamond. I'm a diamond. I'm a diamond. See you again. Yes. दे दे